I have a full-time job, 2 YouTube channels, 2 kids, जिसमें से एक is 4 month old, who give a damn about what I want to achieve in my life. All of this was not enough, तो मैंने ये third YouTube channel create किया है. I don't know why. Maybe this is an escape from whatever, or maybe this is a part of healing after postpartum. So basically I want to talk heart to every single woman जिसको अपनी लाइफ में वो क्रेविंग कभी खत्म ही नहीं होती, कुछ अचीव करने की, कुछ और करने की, कुछ नया करने की. Doesn't matter how comfortable the existing life is, doesn't matter what others have to say, but वो एक जो urge है कुछ क्रिएटिव करने की, कुछ नया करने की, कुछ ऑन द साइड करने की, वो जाती ही नहीं है, नो मैटर वॉट. इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट वैलिडेशन. आई डोंट नो व्हाट दैट इज. आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट दैट इज, बट इफ यू आर अमंग दोज पीपल देन जॉइन माई जर्नी हियर ऑन दिस चैनल. मैं अपनी मैडनेस मतलब किसी के साथ तो शेयर करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू शेयर दिस जर्नी, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग, एंड आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट. बाय द वे, दिस वीडियो इज नॉट अबाउट हाउ टू बी अ सुपर वुमन, बिकॉज मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ. इट माइट कम अक्रॉस फ्रॉम द टाइटल एंड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ इट व्हेन आई से आई हैव अ फुल टाइम जॉब, I have 2 kids, I have 2 YouTube channel, 3 now technically, but I'm not a superwoman. So in this video, I'm going to tell you that how I try to survive doing all of this, because करना तो है, and how to do it, I have tried putting systems in place और कुछ mind shift that I will be sharing with you guys today. And I can definitely say that when you see this video, you'll walk away with some great insights which will help you to achieve things in your life in your own way. Let's get started. Okay, so इससे पहले कि हम strategy discuss करें, let me paint a real picture. So as I said, I already have 2 YouTube channels, जिसमें से एक by the way मुझे याद भी नहीं है कि उस पर मैंने last time video कब post करी थी. That's my HR channel, and I put content there for people who want to work in HR. Beginners हैं उनके लिए amazing content by the way, but because I couldn't keep up with the 2 channels. But I try to stay consistent on my main channel if you want to watch any of that. So that's the reality. And on top of that, I've created this third channel. It gets messy, it gets overwhelming, but I still do it. I remember a particular day, my older one walked up to me and wanted some support, which I couldn't do for the schoolwork because I was trying to feed the baby. Baby was way too cranky, was not accepting the feed. उसी दिन मैंने एक वीडियो पब्लिश करी थी on my main YouTube channel. वो वीडियो didn't do well. I mean the views and all. I was looking forward to it because that topic was very close to my heart and मैंने उसमें बहुत valuable insights share की थी. So I was hoping that it would do well, but it didn't do well. You never know what people like. Anyways, so that happened. और फिर in the evening, I had a call with one of the senior person in the management in the evening. And though I am supposed to be on maternity right now, but anyways, that's a story for another time. So I was supposed to have that call. And that day, my nanny didn't show up. I particularly remember that day looking at the wall just before that call. And I was thinking कि मतलब कोई एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे मतलब जो मैं करना चाह रही हूँ वो हो रहा है. Am I able to achieve a single thing in my life? मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं मेरी लाइफ में, not even a single thing is going on track. My older one is upset with me, my baby is not happy, I'm not able to take call with the leadership team, my nanny is not there, my content is not performing. I was overwhelmed to be honest and almost in tears. But honestly कुछ पहली बार नहीं हो रहा था. हाँ मतलब कुछ एडिशंस थी like the baby and the stuff with my kid, पर सिचुएशन ऐसी पहले भी आ चुकी हैं. एंड आई डिड थिंक अबाउट क्विटिंग कॉन्टेंट एंड नॉट लेटिंग माई सेल्फ गो थ्रू ऑल ऑफ दिस नॉनसेंस, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है. इट्स नॉट अबाउट मनी, एटलीस्ट नॉट फॉर मी, but still I want to do because that urge, that craziness of doing something, achieving something doesn't go away. मतलब multiple times मैंने try किया है to quit YouTube. There have been times जहाँ पे I'm very busy with my job, बिल्कुल time नहीं दे पा रही हूँ और जो भी मैं post कर रही हूँ it's not performing, views वगैरह नहीं आ रहे. Multiple times I've thought कि चलो छोड़ देती हूँ. People around me also who are my well wishers told me कि अरे यार क्यों इतना burden लेना है, just leave it. And I also thought कि चलो ठीक है यार नहीं करते हैं. But in a day or two I'll be back on that same thing. कुछ तो idea आ जाएगा वीडियो का and then I'll start working on that. I remember there have been nights when I'm trying to sleep और वो transition time जब होता है when you're going into sleep, कुछ तो idea आ जाएगा YouTube वीडियो का. Then I would wake up and write those ideas down either in the phone or some notepad. मतलब ये तो हालत है. And this is when I have no reason to stress myself that much. No, absolutely no reason. But if I don't do it, I don't feel fulfilled. मतलब करना तो है. I got to know कि करना तो है, करना तो पड़ेगा करना तो पड़ेगा, अदरवाइज I'll not feel at peace. वो फुलफिलमेंट फील नहीं होगी, वो एम्प्टीनेस लगती रहेगी और समझ में नहीं आएगा कि क्यों लग रही है. सो करना तो है. सो देन आई डिसाइडेड कि
लेट्स प्लेस सम सिस्टम्स अराउंड इट, सम माइंडसेट अराउंड इट, और देखते हैं कि कैसे बेस्ट पॉसिबल हो सकता है कि अब तो आई हैव कम टू टर्म्स विद कि करना तो है। सो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा पैशन प्रोजेक्ट है या कुछ भी है जो मतलब इज नॉट कीपिंग यू एट पीस एंड यू फील लाइक कि करना तो पड़ेगा, कैसे करना है, कैसे वर्क अराउंड होगा वो फिगर आउट करना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल। सो द नंबर वन थिंग जिसने मुझे बहुत बहुत हेल्प की है टू सर्वाइव अराउंड ऑल दिस मैडनेस इज माइंडसेट शिफ्ट। कुछ 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं, इफ यू रिमेंबर देम फॉर योर लाइफ टाइम यू विल नॉट फेल, मतलब फेल इन द सेंस दैट यू विल नॉट stop believing in yourself. And the first thing is that done is much better than perfect. I remember shooting one clip 6-7 times क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, perfect नहीं लग रहा है, मतलब कि ये ठीक से नहीं बोला है, ये point भूल गई, all of that stuff. But now I don't do it. But then I noticed कि जो फ्लॉ मुझे लग रहे हैं या जो चीज़ें मुझे नहीं लग रही वो किसी को नोटिस भी नहीं हो रहा. When I started putting out content, एक बार में जैसा भी बन गया and minimal editing, I started noticing that nobody cares, मतलब उतना परफेक्शनिज्म किसी को चाहिए भी नहीं. एंड आई रियलाइज कि परफेक्शन का कोई एंड नहीं है, एंड स्पेशली वी फीमेल्स वी ट्राई टू परफेक्ट एवरीथिंग, बट टू बी ऑनेस्ट मतलब पूरी लाइफ टाइम भी निकल जाएगी किसी चीज़ को परफेक्ट करने में, वो परफेक्ट तो होगी नहीं, क्योंकि देयर इज ऑलवेज सम रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज़ कितनी भी परफेक्ट हो, उसमें कुछ ना कुछ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होता ही है. सो इफ़ यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि मतलब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा या कुछ और अच्छा इसमें ऐड हो जाएगा या ये सिचुएशन पहले ठीक हो जाए, ये ऐसे हो जाए तब मैं करूंगी, तो वो टाइम तो कभी नहीं आएगा. इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, आई एम सिटिंग इन माई लाउंज वेयर बेयर फेस. कुछ बैकड्रॉप का मैं कर नहीं पाई बिकॉज आई ऑलरेडी हैव इनफ ऑन माई प्लेट. और अगर मैं वेट करूँ कि चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी, मेरे पास बैकड्रॉप होगा, ओ मे बी व्हेन आई हैव टाइम टू पुट माई सेल्फ टुगेदर, तब मैं वीडियो शूट करूँगी तो फिर हो ही नहीं पाएगा, फिर नहीं होगा. So that shows I'm actually walking the walk, not only preaching it. So इस mindset ने मुझे बहुत बहुत help की है. Now I do not try to perfect things. I initiate them whenever I get time. I improve them. I work on them, and then life flows. Another mindset that helped me is, और आप भी relate करोगे इसे, that life happens in seasons and not in perfect balance. मतलब एक week होगा जिसमें I'll be phenomenal as a mom. And then there'll be another week jahan pe I'll get crazy ideas about my content and I'm busy shooting, editing, everything. I'm doing it all. And then there'll be another week jahan pe I'm achieving a lot at my job, doing really well, getting appreciation, wo sab hoga. And then there will be weeks jahan pe kuch bhi acha nahi ho raha hoga, jahan pe like आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ द अदर डे कि कुछ भी ठीक नहीं जा रहा था. नाउ आई नो कि अभी अगर मैं कुछ कंटेंट शूट नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है, तो नॉट टू वरी, द सीजन विल कम. अभी जो सीजन है, इफ आई एम ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स माई बेबी मोर, कि मुझे उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, इवन दो आई हैव अ नैनी, आई डू दैट एंड आई डू दैट गिल्ट फ्री. करती मैं पहले भी थी, बट इट वॉज दैट गिल्ट कि अरे यार वो करना तो रह गया, कॉन्टेंट तो हो नहीं पाया, या ओ माई गॉड आई फॉरगॉट टू डू समथिंग, वो मेरे वर्क का नहीं हो पाया, मेरी जॉब से रिलेटेड कुछ वर्क था नहीं हो पाया, या आई कुडंट से येस टू दैट मीटिंग और टू दैट अपॉर्चुनिटी. वो सब चीज़ें माइंड में हमेशा रहती थी. नाउ आई डू नॉट थिंक अबाउट दैम. आई नो कि ये अभी सीजन चल रहा है, लेट मी इंजॉय इट. सीजन आएगा वो भी, बिकॉज रिमेंबर आई टोल्ड यू कि आई ट्राई टू क्विट, बट देन आई रियलाइज कि ये तो करना ही पड़ेगा. सो थिंग्स विच यू आर पैशनेट अबाउट, किसी ना किसी तरीके से those things will find a way in your life and you will be able to do it. So the message here is that कि अगर कोई चीज़ है जो आप कर नहीं पा रहे हो, मतलब आपने सब ट्राई कर लिया बट सिचुएशंस नहीं बन रही है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि नहीं हो पा रही है, नहीं कर पा रहे हो, मन नहीं है, सिकनेस है, या फिर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि नहीं हो पा रही, देन डू नॉट बीट योर सेल्फ अबाउट इट. मतलब एक तो वो वैसे ही नहीं हो पा रही है, वो एक डिफरेंट एंगल है, एंड देन यू आर इन गिल्ट ऑफ नॉट डूइंग इट, वो डिफरेंट एंगल है. वो गिल्ट इज नॉट सर्विंग यू, उसका कोई फायदा नहीं है. आप नहीं कर पा रहे हो, just forget about it. Just have faith that there will be another season, maybe 2 days later, 3 days later, maybe another week. That season will come back and you will be able to do it. You will be able to achieve whatever you wanted to achieve. Just do not put that burden of guilt, feeling guilty about it. Now also there are days when I'm not very good of a mom, or I should say not very available kind of a mom, but I do not feel guilty about it, because now I know there will be days where I'll feel spending every single minute of that day with my baby. तो आई डोंट फील गिल्टी, आई डोंट टेक दैट प्रेशर कि अरे यार ओ माई गॉड आई एम नॉट दैट गुड ऑफ अ मॉम, मैंने तो अपने बेबी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करा, या फिर मैंने तो कंटेंट अच्छा नहीं करा इस दिन या इस वीक में. Every single day I'm not 100% of a mom, 100% of a content creator, 100% of a HR manager. I am not. My life is happening in seasons, and most probably yours as well.
Another mind shift, and this one is very important for every single female because I think we all fear asking for help. हमें लगता है कि if we ask for help that means कि हम weak हैं, but that's not the case because every single person, हर एक इंसान on this earth is achieving big with help of others. मतलब चाहे कोई कितना इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, इवन ए CEO ऑफ अ कंपनी cannot scale that company without the help of employees. वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कितना ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, कुछ नहीं कर पाएगा. I mean, if he or she wants to scale the company, that person would need the help of employees. सब मिलके ही कुछ कर सकते हैं. So if you want to achieve something in your life और आपको अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है, do not feel कि वो एक वीकनेस है, वीकनेस का साइन है, ऐसा नहीं है. योर पार्टनर, योर हस्बैंड इज एबल टू डू द जॉब बिकॉज यू आर सपोर्टिंग हिम और somebody else is supporting him, mother, sister, wife. That's how they are able to do that one single job. And you and I as a female, हम कितना कुछ करते हैं in life. It makes all the sense to ask for help. So I ask for help. I have a nanny, I have a cook, I have a house help who takes care of the cleaning of the house and stuff. So you see, I have so much help around me. And still I'm struggling to juggle between all these responsibilities. I know with time things will get better. But I'm just trying to tell you, do not shy away from seeking help. क्योंकि अगर ऐसा सोचोगे कि let me do it all alone, I am the superwoman, let me show them what I can do alone, फिर कुछ नहीं हो पाएगा. I mean, you can only go that far, not achieve something big. So please ask for help wherever required. Otherwise, you'll not be able to live a fulfilled life. Because as I said, the passion projects, वो तो करने ही पड़ेंगे. Because if you do not do them, if you suppress them or you try to ignore them, they will haunt you. They will haunt you and they'll keep bugging you. Your mind will be occupied with the ideas or with the thoughts, how I wish I could do it. And you know what else? If you do not take action and do not pursue those passion projects, you'll slowly start developing hatred towards other people. कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा and you will feel like a victim and you'll feel like कि बाकी जो भी लोग मेरे आसपास हैं, they are responsible for my bad life. They are responsible for my unfulfilling life. That happens when you ignore that calling that is coming from within you to do something कि मुझे ये करना है या वो ट्राई करना है. ठीक है, यू आर नॉट श्योर कि होगा कि नहीं होगा, हो सकता है फेलियर हो जाए, बिल्कुल हो सकता है. देयर इज अ हाई चांस क्योंकि यू आर ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है एंड इनफैक्ट वी ऑल आर लिविंग दिस लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम. ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है कि 2-3 लाइफ्स हमने अभी एक्सपीरियंस कर ली है तो नाउ दिस वन इज द परफेक्ट वन, शुड बी द परफेक्ट वन. हमेशा सक्सेस ही मिलना चाहिए जो भी ट्राई करें उसमें. ऐसा नहीं होता. वी कैन ओनली मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. वी कैन ओनली ट्राई आवर बेस्ट. बाकी जो होगा देखा जाएगा. एटलीस्ट you'll not have that regret at your deathbed कि यार shit try करना था, बहुत मन था पर try नहीं करा. And then you will think कि क्यों नहीं try करा. All the reasons that you tell yourself today कि इसलिए try नहीं करा, मेरे पास help नहीं थी, या मैं उसको कैसे बोलूँ help provide करने के लिए, या मैं कैसे जाऊँ out of my comfort zone. All these thoughts, all these reasons will seem very rubbish and small, and you will really regret not doing them, not pursuing your passion. So seek help wherever needed. And the next mindset shift that I had to do was that success is not linear. At least my success journey is not linear. I'm not there yet, but I'm hoping that someday I'll be there where I want to. But this path is definitely not linear, at least for me. There are downfalls, there are days when things are going well, there are days or even months when I have to stop doing things because life have had different plans for me, or I'm sick or whatever. So now every single time life takes a dip at anything, I tell myself this is just a dip. I know I am going to go back to that high again, and this journey will continue, and I'll definitely reach the place where I want to reach. So now I do not beat myself up for not performing well, not showing up on the days when I can't, when things are going downhill in every single department of my life. I just tell my life that this is a season, this is a phase, it will get over. And this does not mean that my journey has ended. No, it's just that the path is not straight. It's not linear for me. That's okay. We'll figure that out. And no matter what, करना तो है. So now let's discuss कि जो करना है वो उसकी कुछ cost भी होगी, my friend. There are many things that I don't do so that I can do whatever I want to do. And that cost can seem a lot to some. So here is a list of everything what I do not do. Number 1, I do not scroll on the phone to see every trending video. That's a reality. I do not have the time to scroll on my phone. With the baby, with the job, with the content creation, I only have so much free time
or time that I can devote to my passion projects. And if I start taking that luxury of scrolling my phone mindlessly, फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा. So you have to decide for yourself कि वो जो scrolling 2-3 घंटे या 3-4 घंटे, I don't know how much you do, that you're doing, which seems harmless, कि अरे यार इससे क्या होगा, it's my stress buster. It's not stress buster, it's your passion project buster. So stop doing it. Once you stop doing it, you'll realize कि you start getting some ideas. वो जब बोर हो गए and you'll not have anything to look at, your mind will start coming up with ideas that you can work upon. So I do not do that scrolling thing. Next is, I do not attend every social event out of FOMO or out of obligation. There have been times जहाँ पे I've planned content creation on a weekend, and somebody from my social circle or relatives called randomly किसी चीज़ के लिए कि get together करते हैं या कुछ पार्टी करते हैं. ऐसा नहीं है कि usually I go when when it's the loved ones and people you want to hang out with, I go. But all of a sudden अगर कोई ऐसा करता है, then it doesn't fit my schedule. Then I say no. And let me tell you very honestly, there have been times when people have judged me. People who are very close to me, they still judge me कि अरे यार मतलब वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया गेट टुगेदर के लिए. फॉर देम वीडियो इज लाइक कि क्या स्टूपिड वीडियो के लिए. एंड देयर आर्ग्यूमेंट वाज कि हमारी वैल्यू एक वीडियो से भी कम है. So always remember that people like these will never let you grow. If they cannot understand the gravity of your passion, या फिर आपके schedule की अगर कोई respect नहीं कर सकते, then it's very unlikely that they'll pull you up in your growth. So I'm sharing this with you because ये होगा, आपके साथ भी होगा. Not necessary for the video making, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं, I mean if you are at your job, वो सब समझ लेंगे कि आप you are at job, that's why you can't come. But अगर उसके अलावा आप कुछ भी कर रहे हैं, which is your passion project or something on the side you want to work on, उसको कोई नहीं कंसिडर करेगा. दैट्स समथिंग रबिश एंड दिल फील लाइक अरे इस चीज़ के लिए मुझे मना कर दिया या सोशल इवेंट को मना कर दिया. सो दे डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी एंड सीरियसनेस ऑफ इट इन योर लाइफ. और जस्ट बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आ रही है, सिर्फ इसलिए do not undervalue it. You do not undervalue it. You stand on your ground and firmly say that no, I have my schedule, I can't come. With all due respect, we can meet some other day. And you suggest some other day. So all of this happens with me all the time because it's not easy to manage everything. It's my choice that I want to work on so many things in my life parallelly. That's a choice I made. So I also know that there will be so many things that I will have to say no to. बिकॉज एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं. मतलब आप कितना ही कर सकते हो. कुछ करने के लिए, किसी चीज़ के लिए जगह बनानी है तो कुछ चीज़ों को नहीं नो भी करना पड़ेगा, उन कुछ चीज़ों को बाहर भी निकालना पड़ेगा. सो दैट्स योर कॉल. एंड वंस यू स्टार्ट ऑन दिस जर्नी, बी फर्म, डेवलप अ थिक स्किन कि ठीक है भाई, you can't respect it, then I don't know. Another thing that I do not do is I do not chase perfection or validation on social media platforms. Whatever I'm creating, that's kind of my work, my side hustle that I'm trying to create. I personally do not compare myself to others as an individual कि किसी के Instagram पे ऐसा आ रहा है, वो उसने ये पोस्ट करा, हॉलीडे पोस्ट करी या कुछ और अचीवमेंट पोस्ट करी, or maybe they are trying out some food, or maybe they are wearing certain clothes. I do not do that comparison. And as I said, I do not even scroll on the phone, so I naturally do not have any time for the comparison, and that saves me a lot of mental space. I'm never bothered what other people are doing. I'm never bothered with what other people are saying about me, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है. I'm not even interested because I'm so focused on कि मुझे क्या करना है, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरी क्या जर्नी है, that all of these things never distract me. I am so focused on my journey. And yes, there are people who make fun of my journey. There are people and they feel like I'm missing out on so many things in life, but they do not know. They do not know yet. उन्हें नहीं पता है मेरी achievements क्या हैं. My plate is full, but it is full with the food that I want to eat, and that's all what matters. My plate is full with the stuff that I want. My plate is not full with random stuff जो मुझे नहीं चाहिए. So they can never relate to the kind of fulfillment I have, and that comes with focus. If you start लुकिंग फॉर वैलिडेशन ऑफ अदर पीपल कि अरे यार मुझे अपना साइड प्रोजेक्ट भी करना है, बट देन मुझे घूमने भी जाना पड़ेगा क्योंकि इंस्टाग्राम पे पिक्चर भी तो डालनी है, चाहे एक दिन के लिए ही सही. डू नॉट फॉल फॉर दीज थिंग्स. आई मीन इट्स ऑल बुलशिट, क्रैप. यू विल बी सिंपली वेस्टिंग योर टाइम. फोकस ऑन व्हाट यू रियली वांट टू डू एंड देन जस्ट इग्नोर द रेस्ट एज इफ कि एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़ें, एज इफ कि इंस्टाग्राम है ही नहीं लाइफ में. आई एनीवेज वॉज नेवर इंस्टा पर्सन. मतलब मुझे कॉन्टेंट क्रिएट करने में भी इतना स्ट्रगल होता है ना वहाँ पे. आई डोंट नो वाई. I sometimes feel कि I'm a very old soul who somehow landed in this era of Instagram.
I find YouTube so much comforting because I can do everything from my laptop. I'm not a phone kind of person कि phone से ही record किया, phone में ही edit करा and then phone में ही upload कर दिया. I am a laptop person. I know that's very old school, but that's how I am. And in fact, it saves me a lot of time, mental space, energy, everything because I don't spend that much time on my phone. So, to every single woman watching this, if you're thinking, oh, I cannot do what she is doing, let me tell you, you do not have to. That is the message. You have to do it your way. You do what you want to do. You do not have to follow any trend. You do not have to follow anybody else's passion project. Do what you really want to do. Yes, you can get inspired from someone. Yes, you can learn from somebody's journey. But do not waste your time in copy pasting somebody else's passion or somebody else's journey in your life. Then it will be a waste of time. Answer to your inner callings, what you really want to do. What is that thing जो कब से आपको ट्राई करनी है बट आपने नहीं की जस्ट बिकॉज इट डजंट फिट इन योर सोशल सर्कल या फिर योर पेरेंट्स डोंट वांट यू टू डू और व्हाट इफ मैं करूँगी तो मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे. Ignore all of that and answer to your true calling. And remember, no matter how busy you are, you can still put systems in place for the thing that you really, really want to do. I am the living proof. And I hope all the mindset shift that I've shared with you, जिसकी वजह से मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, they will help you a lot. And obviously this was not a how to video. I was just sharing कि मैं कैसे कर रही हूँ, मेरी journey कितनी messy है behind the scenes. Though on the surface it looks great, but it's chaotic, it's messy. And when you start on your journey, do not expect everything to be perfect. It will be messy, it will be chaotic, but just keep on going and you will reach the life of your dreams. So if you resonated with today's video, do subscribe and stick around because I'll be bringing more such videos of my journey behind the scenes. मैंने अभी तक क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, and how I'm doing it all. And maybe it encourages you to take steps in your life as well to reach little closer to your dream life. You let me know how did you like the video or what you would want to know about my journey. I would love to create content around that. I just had this undeniable urge to make a YouTube channel or YouTube space where we all women can hang out and where I can discuss exclusive women content about my journey, about my career transitions, about my motherhood and life in general. So stick around, drop your comments, let me know what you want to hear, and I would show up with that. So with that, I'm signing off. You stay safe and healthy. Take care. Bye.